वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम .NET 8 कोर एमबीसी ट्यूटोरियल वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग पार्ट 5 में क्रिएटिंग .NET कोर वेब एप्लीकेशन विथ डिफरेंट various project template and their function. Open the Visual Studio project 22. Open the Visual Studio. Here click the create new project. Now choose. So you can create a project with different template. For example, you can create the console application. You can create the Blazor web application, ASP.NET Core web page, web app with Razor page, and you can also create ASP, ASP.NET Core web API, ASP.NET .NET web API native AOT. And also creating the class library that is used for the in application for different for project creating, for example for business logic, for database access layer, for creating the different project by using the class library, and also creating the ASP.NET Core empty and ASP.NET Core web app with model view and controller. So I am creating this application currently with using model view and controller. Click here, and for demo purpose, given the document management, given the project name, the configure for HTTPS is done. Check here if you using the Docker, then check here. ये ऑथेंटिकेशन टाइप आप विंडो बेस बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आप विंडो बेस एप्लीकेशन यहाँ पे विंडो बेस आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो विंडो बेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी हो गया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का यूजर आईडी पासवर्ड दोगे। विंडो बेस में होगा कि जिस नेटवर्क पे आप क्रिएट कर रहे हो एप्लीकेशन, उस नेटवर्क का यूजर आईडी या पासवर्ड जब क्या कहते हैं सिस्टम के थ्रू लॉगिन होंगे तब आपको आप सिस्टम में मतलब एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो विंडो बेस में। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्चुअली मैं नन सेलेक्ट करके क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट यार yeah, here the application is create document management, and first check the it's working or not. Yeah, okay. Now this here the program.cs class, that is the main entry of the main class of the application. इसमें हम कॉन्फ़िगर सर्विस, जो भी सर्विस होता है उसको रजिस्टर करते हैं, मिडिलवेयर को रजिस्टर करते हैं। फॉर दिस पर्पस जैसे ऐप सेटिंग, व्यूज, विजुअल शेयर फोल्डर, here the layout.html, basically this is a master page, a master form used for common
या जेनेरिक कॉमन या जेनेरिक यूजर फॉर इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन फॉर ऑल। पूरे एप्लीकेशन के लिए जो हम कॉमन जो बनाते हैं, इसके लिए हम लेआउट को यूज़ करते हैं। लेआउट पेज को, इसको मास्टर डिफरेंट डिफरेंट लेआउट पेज आप क्रिएट कर सकते हो एज पर रोल बेस ऑल्सो। ठीक है, दिस इज ए व्यू डॉट इम्पोर्ट डॉट एचटीएमएल। ये एट द टैग टैग हेल्पर या कॉमन आपको कोई नेम स्पेस अगर यूज़ करना है फॉर एप्लीकेशन के लिए, दैट इज यूज फॉर द व्यू डॉट इम्पोर्ट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, दिस इज इंडेक्स डॉट व्यू पेज मतलब व्यू फोल्डर्स हियर द होम डॉट इंडेक्स डॉट html एंड प्राइवेसी। ये व्यू पेज हो गया। मॉडल फॉर यूज फॉर द बिजनेस लॉजिक, कोई बिजनेस लॉजिक या मॉडल क्लास बनाने के लिए हम मॉडल्स यूज करेंगे। कंट्रोलर, कंट्रोलर दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेट बिटवीन द व्यूज एंड कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं मॉडल क्लास, and directly communicate with the controller to view also. One controller to communicate with the many view, that is possible. The www root folder that is used uh, for the static file, CSS, JavaScript, and also in library you can put up the jQuery, jQuery validation। जस्ट इस तरह का फाइल को हम लिफ लाइब्रेरी में रखते हैं। ओके, तो दिस इज द रूट www root for by using the template model view and controller create the document management system. Now show the different with the template. So in same solution I am creating different project like for example, if you want to create the library project in same solution, add new project. For example, you need to add the class library project, and add, for example, uh, document dot infrastructure application. Yeah, so this is class library project. We are create the C class. By default, create the class one. You can आप अपने अकॉर्डिंग आप क्लास करो। ये लाइब्रेरी को इस तरह से आप सेम सोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ मैं आपको डिफरेंट टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल आपको मैं एपीआई का दिखाता हूँ और क्रिएटिंग द एपीआई, वेब एपीआई। डेमो एपीआई, डेमो अगर आप एपीआई यूज करते हो, क्रिएट करते हो, तो एपीआई में आपको सिर्फ कंट्रोलर क्रिएट होते हैं विदाउट क्रिएटिंग द क्या कहते हैं व्यूज या यूजर इंटरफेस का कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। सिर्फ आपको कंट्रोलर क्रिएट होगा और प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास, नथिंग। ये www रूट या CSS फाइल या स्टैटिक फाइल, इसमें एपीआई में आपको नीड नहीं होती। एपीआई का यूज हम करते हैं डेटा एक्सपोज जो होता है वो किसी अदर एप्लीकेशन के हेल्प से करते हैं।
The API हमारा application program interface that is using for interface between the two different application. ठीक है, तो ये हो गया API का. अब अगर आप एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो एम्प्टी प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट करोगे फॉर एग्जांपल क्रिएट a new project with empty. ASP.NET कोड एम्प्टी प्रोजेक्ट. ठीक है, टेस्ट this is empty project. We are not creating the controller या model class. तो फर्दर हम इस वीडियो में from the scratch level creating the empty project and add the controller model class as per requirement या www फर्दर डिस्कशन इसी empty project को scratch level से हम क्रिएट करेंगे कि कैसे हम एक एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट को क्रिएट करके क्या कहते हैं व्यूज या लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में या डिपेंडेंसी इंजेक्टर ये सब. तो फर्दर वीडियो में हम इस वीडियो में आपको बेसिकली मैंने आपको डिफरेंट टेम्पलेट से प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाया कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है. ठीक है, अब एपीआई का देखो तो इसमें सिर्फ एक कंट्रोलर है. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please, if you are new on my channel, please do like and subscribe.